Hello and welcome everyone. This is Professor Siddharth Surana. I hope you guys are doing good और मैं तो हमेशा मस्त ही रहता हूँ. Welcome to the RTP lecture for CA final November 2023 exams. First of all, I apologize for the delay in this lecture. Generally, I make this lecture available very early as possible. However, I have been keeping extremely busy with respect to some of my upcoming plans. I'm going to be making a very big announcement this coming Navratri. So you stay in touch with all the mediums, whether YouTube, Telegram, Instagram, wherever you are comfortable. For now, all I can say is, if you see the ticker under me, this moving information, you'll find the link to the YouTube channel, the Telegram channel, and thereafter, you'll also find that the contact number for approaching me and my office is now changed. Here you see, for any kind of notes, whether it is PDF or hard copy or video lectures, henceforth the number that is going to be used is going to change. I am going to be available whenever required. I will also be personally available on this. This is the office number, but if required, I will be personally available also on this number for all queries and for everything. This is the new number. You can see that 709-709-6161 is going to be the number where you can contact me. The detailed announcement will happen during the festival period, the upcoming Navratri. So, sorry for the delay, but now let us start with our today's lecture, and I request you that whenever I make that announcement, I am going to be in advance announcing on Instagram, on YouTube, Telegram, everywhere, the date of coming and making the live announcement. So, it is my humble request, if I have done any kind of value addition to you or your life, so I request you that please be present with me during that live session, so that your few words of encouragement can keep me going the way it has for the last 13 years, the way it has for 35,000 chartered accountants of the country. I wish to do the best for my students. So, I request you to please join me on that live session whenever I will announce the date and time. It will be mostly a Sunday only, but during the Navratri, it can be at any point of time. Let us start with the lecture. This lecture, like always, is going to be divided in 3 parts. One, we have the RTP, where ICAI has released questions. There are some MCQs, case study based MCQs also, and independent individual MCQs, and then there are subjective questions. As far as these MCQs are concerned, ICAI has only given the answers. So I have solved them already, and the solutions of these MCQs, the PDF, I have already uploaded on Telegram much before this lecture being recorded. So the solutions are already available, though I am going to be discussing all the answers with you in this video. And as far as subjective is concerned, because the answers are already printed, I just have to briefly tell you about the question is from what kind of background, what kind of adjustments are tested, because the solutions are already there. So this will be discussed in detail, and already I have put the solution in the Telegram channel, and this will be only like an overview. It is going to be discussed. Next, we have something called the statutory updates, some new circulars that have been released by ICAI. Only 2 are there. This is the smallest part, so I'll pick up this as the first thing, and then there are some new case laws. So these are, you can say, the amendments, and these are the case laws that have been announced by ICAI. This is the smallest part, so I'll pick this up as first thing. Then the judicial update. Last, I'll discuss the MCQs and the subjective part with you. So let us pick up our first part, the smallest part, statutory update. There are only 2 circulars. One is with respect to your PAN being inoperative, how it is going to take place, and the second one is on 269 ST, the acceptance of payments in cash in 2 lakh rupees or more. Before I discuss these 2 circulars also, a very quick reminder, I did this in the last RTP lecture also with an apology, that this newly introduced section 194S, which is an amendment. See, all the amendments are already taught in the regular lectures, whether it was the Hindi-English mixed lecture, whether it was the only English lecture. All amendments which are applicable for assessment year 23-24, the assessment year applicable for November 23, are already covered in class. There is no new amendment apart from these circulars. But 194S, I had informed in the case law lecture to students. Just a quick reminder, in 194S there was an error, and I had apologized last time also in the last RTP lecture. I just again, for a confirmation, so that there is no confusion, there are 2 monetary limits. One is 50,000 and the other is not 20,000, it is 10,000. 50,000 and 10,000 are the 2
monetary limits on that new provision of virtual digital assets. So whatever was the error, I apologize for that. I did it in the last RTP lecture also, so that there is no confusion. Just make this correction. Now let us go to the two circulars that we have. First is with respect to making your PAN inoperative. So you had to link your PAN and Aadhaar. You had to link your PAN and Aadhaar up to 31st March 2022. Any person who has been allotted PAN as on 1st July 2017 and you are eligible to obtain Aadhaar, you have to link it. If you do not link it, it is going to be made inoperative. If you do not link it, it is going to be made inoperative and you are going to be liable for fees under section 234H. Fees under section 234H. With respect to that, as you are aware, first 3 months ka matlab up to 30th June ka if it is delayed. See, the medium of communication of this lecture is majorly going to be English only, because everyone is aware I have got a huge number of students from South India. However, appropriate जगह पे हिंदी यूज होगी, जहां पे जरूरत है वहां पे यूज होगी. ऐसा आरटीपी का लेक्चर या ऐसा सर्कुलर का या अमेंडमेंट का लेक्चर, you don't expect me to do them in 2 languages. Come on, I hope you understand. Okay, already I am struggling for time, so because of the immense workload that I am currently having, so I hope you understand. 234H का फीस लगता है. Up to delay of 3 months we know 500, beyond that it is 1000, it is the fees. But now the following clarifications are given by CBDT in this notification. First, the date from which your PAN will become inoperative. So you have been allotted PAN as on 1st July 17, the day when they propose to bring it. You are required to intimate Aadhaar number on or before 31st March 2022. The PAN of such person shall become inoperative and you shall be liable for payment of fees under 234H, which 500 and 1000 we are aware. Once your PAN has become inoperative, can you apply to make it operative again? अरे सर मेरे को मेरा पैन वापस यूज करना है सर, मेक इट ऑपरेटिव अगेन. सो यू पे द फीस, यू लिंक योर पैन एंड आधार एंड it will become operative again within a period of 30 days of intimation. So pay the fees, intimate your Aadhaar, and within 30 days your PAN will become operative again. A very, very important thing, what will be the consequences of failure to intimate your Aadhaar number? Any person whose PAN has become inoperative shall be liable for the following consequences. First, you will not be getting any refund. मतलब आपका TDS deduct हो गया, आपका advance tax pay हुआ है, but you don't have tax liability. You are eligible for refund, but your PAN is inoperative. We will not give you that refund. You will not be getting any interest for that period, during the period for which your PAN was inoperative. See, normally whenever we are eligible for refund, we get refund with 0.5% interest, and in that it is clearly written if there is any delay on part of the assessee. So for that period you will not be eligible for getting any interest. So this is that period which is delay because of the assessee. No interest, no interest. Where TDS is deductible under chapter 17B is nothing but TDS, it shall be deducted at higher rate, 206AA, PAN not furnished. So actual or 20%, whichever is higher. In some cases there are exceptions. Instead of 20 they have kept 5%, etc. So wherever TDS is applicable, it will be applicable at higher rate. Same is the case of TCS. When you don't furnish your PAN, TCS also becomes higher, double or 5%, whichever is higher. Same thing. Matlab the higher rate of TDS, TCS in the absence of PAN. In the absence of PAN, TDS का TCS का जो higher rate लगता है, that is also going to be applicable. And then one clarification came that since which date this inoperative ka consequence will come. This is important. See, the last date we gave you was 31st March 22. This was the last date. इसके बाद लिंक करोगे तो आपको फीस भरना पड़ेगा. Up to 30th June they kept 500. Then till 31st March 23 they kept it this. However, they have now clarified that the above circular, inoperative बनाने वाला circular, is going to be applicable from 1st July 2023. That means आपका पैन जो इनऑपरेटिव बनेगा वो 1st July 2023 से बनेगा और 1000 रुपए का जो फीस लगता है that is going to be applicable. But of course there are some cases who are being exempt from intimating your PAN, intimating your Aadhaar and linking it with PAN. For example, आपका non-citizen 80 years and above, so those people obviously are not going to get covered out. So this was one small circular, and the second is with respect to 269 ST. In case of dealership or distributorship, in case of cooperative societies, dealership or distributorship contract in case of cooperative society. First of all, what is the provision of 269 ST? You will not be allowed to receive 2 lakh rupees or more other than the 3 allowable modes: account pay, check, account pay, draft, electronic mode, from one person in one day in respect of single transaction, in respect of transactions arising from one occasion or event. Now,
with respect to transactions which is with a distributor, whether you will be treating it as one event or occasion. It is hereby clarified that cooperative societies, in respect of cooperative society, a dealership or distributorship contract may not constitute an event or occasion for the purpose of levy of this. Such the receipt related to such dealership contract by the cooperative society on any day in any previous year is within the prescribed limit and it complies with clause A and clause B. It will not be aggregated. So whenever a cooperative society is giving any dealership to anyone, on multiple days the dealership is going to receive money from the cooperative society. So these are going to be different transactions. Any individual transaction should not touch the threshold of 2 lakh. If an individual transaction touches 2 lakh, of course it is violation, but the total will not be taken. We are not going to aggregate it to apply the penalty. So that is the second thing. And the third thing is, one more thing is that, so there are 3 things that we have to study here. The third thing is with respect to your statement of financial transaction, SOFT. Interest income is required to be reported in SOFT without any threshold limit. So what is this? Section 285BA, statement of financial transaction. For the purpose of pre-filing the income tax return, CBDT had given a notification, and because of which in AIS, TIS we get all our interest related data. Those who have been doing return filing in office are aware of this, that in our AIS statement, TIS statement, the interest data is already attached and it is pre-filled in our income tax return. Okay. So with respect to all account and deposit holders where cumulative interest exceeds 5,000 per person in a financial year, now CBDT is saying that the information has to be reported for all account and deposit holders which exceeds 0 rupees. Matlab any rupee of interest has to be reported, excluding only what? The Jan Dhan account. So other than the Jan Dhan accounts, in all other accounts, the banks have to now report any amount of interest irrespective of whether it is exceeding any threshold or not. We are withdrawing the threshold, so it has to be always reported. So that was the smallest part of the lecture, that is statutory updates. We go to the second part, slightly big part, but be it. I have already mentioned the summary of the case laws against them. At the end of the day, as far as study of these case laws is concerned, what you need to know is what was the final judgment of the court. Of course, you need to know the provision. Provision to हमने class में पढ़ा है ना. See, this RTP lecture or the judicial update or the statutory update are meant for our regular full course students. आप ऐसा नहीं कि आप सीधा ये लेक्चर देखने आप बोला सर ये पढ़ के मेरे को मिल जाएगा क्या मार्क्स. Lol, are you what? That's a big joke, by the way. So obviously you have studied everything. Now this is only an update. So once you know these sections, only the court decisions on particular points, especially these case laws, all being judgments of High Court, Supreme Court, we clearly understand that there must definitely be a question of law. And because the law was not clear, case law took place. The first question, first case law, Apex Laboratories, Supreme Court judgment, any expense incurred by pharmaceutical companies in providing incentives to medical practitioners, doctors, which are in violation of the provisions of Indian Medical Council, Professional Conduct and Ethics, are allowable under section 37 or no. We already have had clear detailed understanding whether it was the case law of CAP Scan and Diagnostic Center, whether it was the case law of Confederation of Indian Pharmaceutical Industry. These case laws are over and above the case law that I have already taught you in the full course and the crash course. Yeah, replacement नहीं है ये उसका. वो केस लॉ किया ना, कैप स्कैन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. Any kind of freebies or incentives provided to medical practitioners which is violation of professional ethics is going to be clearly disallowed. This way or that way, it is never going to be allowed. अब देखो detail में, now that see I am discussing the issue and the judgment, that is what is required. See, exam के लिए अगर आपको करना only that is required. By the way, my teaching pattern, those who are my students know that exam is not the only criteria why I conduct my lectures. My whole idea is that at the end of your exam, once you have your results, you should be a professional who has got knowledge and thus will have more opportunities. Only clearing the exam will not obviously bring opportunities. Knowledge is important, but फिलहाल जो stage and जो timing का issue है, in that at least you prepare for your exam. Of course, for knowledge purposes, you should definitely read the whole text of the case law. These are only 16 pages and you don't have to memorize or memorize क्या करना है? Memorize ही करना. This is the
judgment given by the court, honorable Supreme Court है. You just have to memorize this. कि फाइनल जजमेंट क्या है, ये एग्जाम में आएगा. बाकी खाली रीड करें, ये सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है. रीड भी कर लिया, you are having knowledge as well as exam preparation. So that is what my suggestion is going to be at the end of the day. Choice is yours. Next, Reliance Energy Limited, Supreme Court का judgment. वैसे what Supreme Court said here is ridiculous, nonsense, rubbish absolute. But then if the name is Reliance, there is nothing called rubbish. Kids, men, legends. Kids learn the law, men teach the law, legends get the law decided for themselves. Reliance Energy Limited. The issue is with respect to income related chapter 6 है deduction. You will be having some eligible business. Supposingly eligible business में आपको 80 lakh rupees का profit हुआ. Minus you will be having some ineligible business which is not eligible for chapter 6 से deduction, income related deduction. So उसमें आपको 10 लाख का loss हुआ है, which is why I am doing minus. So net PGBP that you are offering is 70 lakh rupees. Please understand. PGBP क्या है? जो business में chapter 6 से deduction मिलता है, you are allowed. In that you have got 80 lakh rupees का profit. जो business में नहीं मिलता है, there may be some businesses not eligible for chapter 6 से, उसमें loss हुआ है 10 लाख. You can set off that loss. So net PGBP will be 70 lakh. समझ लीजिए आपका other income है 25 लाख रुपए का. तो your gross total income becomes 95 lakh. Now that 95 lakh आ गया, आपको chapter 6 से का डिडक्शन लेना है, which is the eligible business का profit. अब हुआ क्या, eligible business का वैसे तो profit was 80 lakhs, but have we taken deduction of set off of loss, not deduction but set off of loss. That means in PGBP finally we have reflected only 70 lakhs. तो ideally आपको डिडक्शन मिलना कितने का चाहिए, 70, because only that much profit is coming, no, in 95. Supreme Court बोलता है, listen, you are Reliance, no? What is your profit from eligible business? Profit from eligible business. Profit from eligible business. 80, 80, 80, 80, 80. Profit from eligible business is going to be eligible for deduction. हाँ, हमारे पास GTI है इसलिए. Supposingly other income नहीं होती. If this other income was not there, my GTI only would have been 70 lakhs. Then of course I cannot take deduction more than GTI. But the question today is, eligible business का profit is reduced because of set off, but GTI has got other income. And I can take deduction of 80 lakh against GTI if I have that much GTI. In other words, 80 lakh का आपको डिडक्शन मिलेगा. वैसे तो you have taken set off, वैसे तो you have taken set off, but 80 lakh का आपको डिडक्शन मिलेगा. The profit of eligible business reduced due to set off, but chapter 6 से allowed on entire business profit from gross total income. अलग ही ठग लाइफ चल रहा है. What numbers I have taken? एक similar number के साथ में they have also explained here. Profit from eligible business 90 lakh, loss from non-eligible business 20. तो PGBP में आप 70 lakh दिखाएंगे. Gross total income is 85 because you may be having other income. तो deduction under आपका chapter 6 से will not be restricted to your business profit. आप 85 जितना, यहां पे तो 85 होगा because the gross total income is 85 only. If the gross total income had exceeded 90 lakh, समझ लो 95 lakh होता, तो आपको पूरा का पूरा 90 लाख जो एलिजिबल बिजनेस है, दैट एंटायर प्रॉफिट वुड हैव बीन एलिजिबल फॉर डिडक्शन. एट द एंड ऑफ द डे, रिलायंस कर लो दुनिया मुट्ठी में. नेक्स्ट, वेरी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. अन्ना साहेब पाटिल माथाडी कामगार सहकारी पथपेढी लिमिटेड, a typical Maharashtrian cooperative society. Only people from Maharashtra are aware of this thing called Mathadi Kamgar Pathapedi. This is a type of society which gives credit to its members, credit facilities to its members. Later in the lecture, because in the MCQ case study, ICAI has asked about ATP cooperative society, which historically they have never asked. For the last so many years, more than a decade, they have never tested anything on ATP. So we generally don't consume time. Already time is very precious. But I am going to be having a little discussion on ATP with you about cooperative society. Right now, let me tell you orally only that ATP ka deduction is not allowed to cooperative banks. Other cooperative societies which give credit facilities to their members, etc., are eligible for ATP deduction. Now this Pathapedi Limited, it is like a Maharashtrian bank where there are members, like a cooperative society, they are members, and whenever some Maharashtrian family requires any loan or anything, the Pathapedi, which is the cooperative society, Pathapedi is the cooperative society, lends the money to the members at, reasonable interest rates. So this is basically providing credit facilities to
its members. The assessing officer disallowed, saying that you are giving loans. No? Giving loans means you are a cooperative bank, and cooperative banks are not allowed ATP deduction. I am going to discuss ATP today with you. So cooperative banks are not allowed ATP. On this ground, the assessing officer disallowed the deduction. Supreme Court said ATP is not allowed to cooperative bank, understood, but just giving credit facilities to your own members will not be treated as banking business, and accordingly, this Mathadi Kamgar Sahakari Pathapedi is going to be eligible for ATP deduction. Just giving credit facilities to your members does not amount to becoming a cooperative bank. It does not amount to banking business. Okay. Next, Cognizant Technology Solutions of India Private Limited. Again, Supreme Court deduction. We are talking about the deduction of 10AA. SEZ, profit into export upon total turnover, first 5 years 100%, next 5 years 50%. Now, sometimes what will happen? You have done export. अभी export करोगे तो you may get money in the foreign currency. तो जो आपका profits होएगा, that profit will be your trading profit plus forex में भी gain हो सकता है. See, you did export. आपको dollars मिलने वाला after 3 months. So the dollar rate increased during these 3 months. So ultimately, when you will realize your dollar receipts, you are actually going to get more in rupee terms. So the overall profit in rupee terms is going to be higher than what you otherwise would have expected. So that forex gain will also be included in the profits eligible for 10AA is what was held by the Supreme Court here. Next, New Noble Educational Society. This is with respect to an educational trust doing other than educational activity. The requirement, whether it is 1023 or even in section 11, that you should be solely engaging in education means, can you not have any other objective? Yeah. Is it necessary that whatever profit you have, it should be incidental to your educational activity? See, till now what we have been taught in charitable trust chapter is that जो profit है वो अगर education के लिए use किया तो activity can be anything. Those who have attended my full course lectures distinctly remember I say that you are selling alcohol and with that money you are running a school. So no problem, because the business and the charity have to be related. The condition applies only for advancement of any other object. For education, medical, relief for the poor, it does not apply. So this trust was doing multiple activities. It took support of past Supreme Court judgment. There is Queen's Educational Society. There was this Surat Art Silk Cloth Manufacturing Association. Okay. In these case laws, it was held that once your objective is education, irrespective of whether you have profit or you don't have profit, irrespective of you are making money or no, you will get your exemption till the time your objective is education. But Supreme Court now says that none of the earlier case laws, this is Supreme Court ka observation, none of the previous decisions really define what is the meaning of solely for the purpose of education. Supreme Court now says where the objective of the institution appears to be profit oriented, we will not be giving you any tax benefit. This will apply to 1023 se wala education trust also. This will apply to your section 11 wala trust also. If at all you are earning any business profit, we are never prohibiting you. You can earn business profit, but it has to be incidental to your educational activity, like sale of textbook, providing school bus, hostel facilities. Any random profits that you earn. What kind of random profits? Giving their premises to other entities. A lot of educational institutions let out their halls, their auditoriums for conducting, seminars. We in Mumbai, we have got some big colleges who have got very, very big auditoriums. They give those auditoriums to rent on rent for conducting, CA related seminars and all that. For the purpose of conducting workshops, seminar, educational courses, which is not concerned with this trust activity. You are just giving it on rent to random people. Then that cannot be characterized as a part of imparting education. What the Supreme Court concludes is solely for the purpose of education is the crux of getting the exemption. You have to be created for education. All commercial activities that you do are allowed, but they should be related to the education that you do. Random commercial activities will not be allowed is what now we are doing, and it is hereby given by ICAI also that we are overruling the earlier case law, and that Queen's Educational Society ka case law, which we may have studied in the full course crash course lectures or even in the earlier case law lecture, that is to be now ignored. And that is how dynamic our taxation law is. Matlab, you cannot say that I am right or you are right. Yesterday all of us were right, today all of us are wrong. The law is continuously changing. You have to learn, unlearn, relearn. That is what is expected from a good professional. CA final is just one phase of life.
Once this phase gets over, you have a big long career waiting for you. And just one time study के सर आज पढ़ लिया, आज के बाद अभी मेरे को पूरा इनकम टैक्स आ गया. अरे, I have been teaching income tax for the last 13 years and still I have to study it. Every time auntie brings up auntie, you know who is auntie. Every time she brings about changes, I have to study it. Every time these new case laws come, I have to study. Every time statutory updates come, I have to study. Institute brings new questions, I have to solve them. It's a continuous process. A chartered accountant is a forever student, and you keep learning, keep sharpening your skills, because end of the day, degree is important, skills are more important. Okay, so we have to now change what we have earlier studied, and we are now going to say that only related to educational activity is going to be allowed. Next, Ahmedabad Urban Development Authority. Until a couple of years ago, I used to go and take huge number of lectures in Ahmedabad. Now I have stopped physically traveling to Ahmedabad. I sometimes miss the students, the love, the affection out there. Ahmedabad Urban Development Authority, AUDA is what it is popularly known as. This is that organization which does the urban planning, the urban development planning out there in Ahmedabad. So basically, this is again with respect to your charitable trust, whether the section 2 clause 15 charitable purpose ka definition, relief for the poor, yoga, education, medical relief, we are talking about all that. So over there we also have advancement of any other object of general public utility, for which there are conditions. Condition 1, your receipts should be within, commercial receipts should be within 20% of total receipts, and condition 2, such activity should be in course of carrying out your advancement. So there was this trust which was charging huge amount over and above the cost price. First of all, we have to decide which activity can be called commercial, which activity cannot be called commercial. That is the decision given. Okay. We are not creating a new rule that will apply to all. We are just putting down a criteria. Supreme Court says that if you charge nominal markup over your cost, whatever cost you are incurring to provide facilities or services to your customers, nominal markup is not commercial activity only. So for that, we don't have to check 20% or anything else. But if you are charging significant markup, then it is commercial. If you are charging immense profit, then it is commercial. But still commercial also within the limit of 20%, that will also be allowed. So if you are charging very bare minimum markup over cost, little profit over cost, that is allowed. That is not even commercial activity. We don't even check the 20% limit. But if you are charging significant markup, again, they are leaving it to debate and discussion, because what do you mean by nominal markup, what do you mean by significant? Unfortunately, there is absolutely no clarification with respect to that. But they just make it clear to the extent of this much. Nominal markup is not commercial activity, so no need to check 20% limit. Significant markup is commercial activity. That also, if within 20% limit, then no problem. And that is how we will decide for charitable purpose, advancement of any other object of general public utility. Next is a fact-based case. So, honestly speaking, if the facts change a little bit, the rules will change. This is with respect to Singapore Airlines, KLM, Royal Dutch Airlines, British Airways, multiple airlines together. Just like we already had one more, if you remember, Japan Airlines, Singapore Airlines. That was with respect to the payment made to Airport Authority of India Limited. So we have to apply contractor wala section. Here what is happening? Here there is an organization, International Air Transport Association, which allows airline to sell tickets for whatever price you want to. You can reduce if you want, but you cannot increase. So they have decided a benchmark of maximum fees charged by airlines. You can charge below that, but not above that. So what airlines will do is, airlines will give the ticket to the agent. The agent will further sell in the market. A numerical example is given with respect to that to make you understand. There is a base fare that the airline is allowed to charge. That's 1 lakh rupees. That's decided by that association, IATA. You can charge less, but you can't charge more. So, airline bola, I will charge 60,000. Is 60,000 within the limit of 1 lakh? 1 lakh is the limit laid down by the association. You can charge less. Airline bola, I am happy with 60. Now, the agent is selling the ticket in the market at 80. So, agent is buying the ticket from the airline at 60, selling in the market at 80, and plus on this fare which is decided by IATA, which can be reduced, not increased,
the agent is getting 7% commission, 7% of this 1 lakh. That means the agent is making double profit. How? On this, we are giving him 7% commission, that is 7,000, plus airline say he is doing trading profit, he is buying it at 60 and selling it at 80. So this 20,000. So question is, this 7,000 is definitely commission. Therefore, there will be TDS. But what about this 20,000? Because the agent is buying and selling. Okay. So this Supreme Court just went and checked the facts. The facts hardly, hardly any law part here. This is majorly fact oriented, that airline is aware of the price that is being charged. And airline is the owner of the ticket. The agent is acting only on behalf. Airline wants 60. Agent can make it 65, 70, 75, 80. Agent can make it whatever he wants. But airline is aware of that. Because end of the day, they are going to collect it from the customers. And end of the day, the ticket ka ownership is with airline always. The agent never becomes the owner. Agent is acting on behalf of the airline. And thus, it was held that commission will attract TDS. This is in the nature of commission and it will attract TDS under 194. H the entire amount. So, 7,000 on 1 lakh and 20,000, the difference between the two prices, both will apply or both will attract the TDS provisions. Next, you have applied for MAP. This is an international tax sponsor, mutual agreement procedure. During that time, you have not paid your tax. Whatever be the result of the MAP, you have to pay interest. See, you can ask for waiver of penalty. This is one thing which we have studied in our day-to-day taxation laws also. Payment of penalty is not mandatory because he will give you show cause notice, reasonable cause and all. But interest is always going to be mandatory. Penalty can be waived, interest cannot be waived, subject to some cases where you can go and get it reduced from the CCIT, DGIT. That's a different thing altogether. Next, Reliance Telecom, Reliance Communication, name was changed. That is why the two names. Again, Supreme Court decision. And again, it is Reliance. To give you a short summary, ITAT gave its judgment on 6th September 2013. So, there was a case between the assessee and the AO. Matter went up to ITAT. ITAT gave its judgment on 6th of September. That was in favor of the department. So, assessee has lost the case. Assessee should do what? Appeal against this case to High Court if it is a question of law. Assessee did that. So, fair enough. You lost the case, department won the case, assessee has appealed at High Court. But at the same time, assessee also applied to ITAT to recall its order. Assessee said, ITAT, me Reliance, hi ITAT, take this, pink color Mahatma Gandhi, take this, please cancel your order. See, if ITAT cancels its order, that means favor taken of the department only will get cancelled. So, the ITAT has already taken favor of the department. Assessee thinks that why fight at High Court? Just tell ITAT to withdraw its order. The ITAT actually recalled its order. Now, department got very angry because department had already won the case. Department said, if you have a problem, you go to High Court, we'll see you over there. So, department now appealed against this recalling of order. Finally, department won the case. Department won the case. Reliance has killed. ITAT cannot recall its own order because if we allow this, it will set a wrong benchmark. ITAT ने अपना order देने के बाद में recall किया, it becomes to, it amounts to review, reconsider, reappreciate, change in opinion. That is not allowed. अगर ये allow किया, it will set a very, very wrong benchmark. So, ITAT cannot recall its order. Otherwise, other people will also start requesting. That's clear. That means the original order is restored. That means department has won the case. But it is Reliance, no? Supreme Court said, assessee, listen, you are Reliance, no? I allow your appeal against the original order. So, the original order will be restored. But you appeal to High Court because ITAT ka order hai, you can appeal to High Court. You understood? So, ITAT cannot recall its order, but assessee can appeal against that order at High Court. Is that clear? Next, Wipro Finance, it is giving, it is in the business of day-to-day funding. Okay, so loss incurred in foreign currency fluctuation at the time of repayment of loan taken for acquisition of plant and machinery on hire purchase by an Indian enterprise with whom the assessee company has hire purchase agreement. This company, Wipro Finance, is in the business of hire purchase. It is lending money. So, the
borrowers are our customers, they are paying us interest, but because the foreign currency rate changes, we have suffered some losses in foreign currency. As it is a day to day business activity, it is going to be allowed as a deduction. हमारे लिए day to day business activity. See, the borrower may have taken the loan for acquisition of fixed asset, but for us it is a day to day business. Loan देना हमारा रोज का business है, तो it is going to be allowed as a deduction. Next, the issue is with respect to determination of arm's length price and the transfer price. We have 6 methods: cup method, resale price method. We have all those methods. We also have range concept, etc. So the ALP was decided. The question is, can the ALP challenged? Can the ALP be challenged at High Court? क्या ALP के कैलकुलेशन को आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? वैसे we can go to high court only if it is a question of law. So we cannot go to high court for question of fact. And mind says, यार sir, आर्म्स लेंथ प्राइस का कैलकुलेशन तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, उसके अगेंस्ट हम लोग हाई कोर्ट तो नहीं जा सकते. जा सकते, बिकॉज while calculating you have to apply the law. No, cup method का law you have to apply, RPM का law you have to apply, TNMM का law you have to apply. Is it possible that you have not applied the law correctly? If you have not applied the law correctly, we are going to allow. ALP is a question of fact, but whether rules are followed or not followed is not a question of fact, and thus High Court can always assume jurisdiction in those cases also. Next comes a TDS का case law, US Technologies International Private Limited, Supreme Court judgment with respect to penalty 271C. We have 100% penalty. TDS not deducted, deducted but not deposited, 100% का penalty. Now, the question was that assessee has deducted TDS but not deposited. But deduct किया है, deposit नहीं किया. So can that penalty apply? TDS, see, historically we have always been applying the penalty. It is about somebody who went and fought the case and went and won it. तो जब भी केस हुआ ना, जाके सेक्शन की रीडिंग की जाए. सेक्शन का डिटेल रीडिंग किया तो पता चला सेक्शन 271C says if there is failure of the assessee to deduct, there will be 100% penalty of the TDS amount. 100% of the TDS amount. क्या वर्ड यूज किया? फेलियर टू डिडक्ट, 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 डिडक्ट. मतलब अगर आपने डिडक्ट किया और डिपॉजिट नहीं किया, देयर इज नो फेलियर एंड देयरफॉर देयर विल बी नो पेनल्टी. इफ यू डोंट डिडक्ट, देयर विल बी पेनल्टी. इफ यू डिडक्ट बट यू डोंट डिपॉजिट, देयर विल बी नो पेनल्टी. अंडरस्टूड? एंड लास्ट, again Supreme Court judgment, AT Dev Prabha joint ventures. It was again a case of delay in depositing TDS, whether prosecution will be given or no. See, penalty वगैरह लगाना है, जो भी लगाना है, interest लगाना है, जो भी लगाना है. In day-to-day lectures also you have been communicated that income tax law is a fiscal law. They don't want to arrest you. They want money. So because it was a very, very insignificant amount, it was less than 50,000 here. In this case, it's a fact-based case again. Because it was less than 50,000, considering it being an insignificant amount, it was decided that penalty is not going to be levied in this case. Interest लगेगा, आपका disallowance लगाना है वो लगेगा, but penalty is not going to be levied is what was held. That, ladies and gentlemen, were your judicial updates, your new case laws that have been announced for the November 23 exam. With this, ladies and gentlemen, we will go to the last part of our RTP lecture, that is the actual RTP, MCQs, detailed discussion and subjective questions. Just a brief idea. First, I would like to discuss with you this section, ATP, because traditionally it was never important. Last so many years they have, I still believe they won't ask, but because they have asked an MCQ case study on this, you need to have a little idea about this. So they simply say this is the actual section from the BARAC, where an assessee being a cooperative society, the GTI includes the following incomes. Incomes referred to in subsection 2 means if you have the following incomes, you will get a deduction in accordance with the subject to the and subject to the provisions of this section. You will get the deduction of all these incomes. मतलब ये एक deduction है. These incomes, these are all incomes of a cooperative society. They will come in your gross total income, but later we will give you 100% deduction of these incomes. So what are the incomes in respect of a cooperative society engaged in carrying on the business of banking, but this is only providing credit facilities to its members, only providing credit facilities to its members. So any cooperative bank is disqualified, that is later on provided separately by way of another subsection. The deduction is only with respect to a cooperative society providing credit facilities to its members.
If it is a cottage industry, it will earn profits from cottage industry. 100% profits will be allowed as a deduction. See, so deduction calculation is very easy. It will come in income, come in GTI, become deduction. इनकम में लिखो डिडक्शन दो, इनकम में लिखो डिडक्शन दो, 100% डिडक्शन मिलता है. बट खाली देख लो क्या क्या बिजनेस कवर्ड है, कौन कौन एलिजिबल है. मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस गोन बाय इट्स ओन मेंबर्स, मतलब एग्रीकल्चर सोसाइटी है, मेंबर्स ने उगाया, इसने मार्केटिंग किया. परचेस ऑफ एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, सीड्स, लाइवस्टॉक, अदर आर्टिकल्स इंटेंडेड फॉर एग्रीकल्चर फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाइंग देम टू इट्स मेंबर्स, मतलब ये सब इसने खरीद के अपने मेंबर्स को सप्लाई किया. प्रोसेसिंग विदाउट द एड ऑफ पावर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ इट्स मेंबर्स, मैन्युअल प्रोसेसिंग कर रहा है. कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ द labor of its members. Fishing or allied activities, that is to say catching, curing, processing, preserving, storing, marketing of fish products, all this for the purpose of supplying them to its members. The whole of the amount of PGBP will be allowed as a deduction. However, any society falling in clause 6 or 7, मतलब collective disposal or labor and the fishing or allied activities wala point, and the bylaws restrict voting rights of the following classes of members. The individuals who contribute the labor, उनको यहाँ पे वोटिंग करना अलाउड नहीं है, या cooperative credit societies which provide financial assistance, and this. Okay, you have to make sure that आपको ये restriction डालना पड़ेगा. जो लोग का लेबर आप आगे सेल कर रहे हो, you have members, their collective labor you are marketing, so they should not be having voting rights. State government should not be having voting rights. Those who provide finance should not be having voting rights. If you fulfill this condition, then only you will be eligible for deduction. Then in that was, you know, the first clause, clause A, under which certain businesses are covered. Then in clause B, cooperative society being a primary society engaged in supplying milk, oil, seeds, fruits, vegetable grown by its own members. किसको supply किया? Federal cooperative society being engaged in the business of supplying milk, oil, seed, milk वाली, fruits वाली, vegetable वाली society को, government को या local authority को, government company को as defined in the Companies Act, then again the entire amount of profits will be allowed as a deduction. Next, cooperative society engage in activities other than specified above, मतलब ऊपर की activities छोड़ के either independently or in addition to all of the activities, then so much of its profits and gains as do not exceed, where it's a consumer cooperative society, only 100,000, मतलब 1 lakh rupees, and in case of any other case 50,000 rupees. इतने का आपको डिडक्शन मिल जाएगा. इफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, दिस इज इंपॉर्टेंट, अर्न्स इंटरेस्ट डिविडेंड डिराइव बाय इन्वेस्टमेंट विद एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट या डिविडेंड अर्न किया, तो उसके ऊपर इसको फुल डिडक्शन मिलेगा. डिडक्शन है, एग्जेम्पशन नहीं है. सो राइट इन इनकम, राइट इन जीटीआई, टेक डिडक्शन, इनकम जीटीआई डिडक्शन, इनकम जीटीआई डिडक्शन. इसीलिए तो सोसाइटी टू सोसाइटी जब इंटरेस्ट पे होता है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है, बिकॉज वन सोसाइटी पेइंग टू अदर सोसाइटी, नो टीडीएस, बिकॉज द इंटरेस्ट इज एनीवेज गोइंग टू बी डिडक्टेड. इनकम डिराइव बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ गोडाउन्स और वेयरहाउसेस फॉर स्टोरेज, प्रोसेसिंग और फैसिलिटिंग द मार्केटिंग ऑफ कमोडिटीज, द होल ऑफ सच इनकम, मतलब गोडाउन्स का लेटिंग आउट इज ऑल्सो कवर्ड. In case of a cooperative society not being a housing society or urban consumer society or society carrying on transport business or society engaged in performance of any manufacturing operations with the aid of power, where the GTI does not exceed 20,000 rupees, the amount of any income by way of interest on securities or any income from house property. मतलब अगर आपकी gross total income up to rupees 20,000 है, then interest on securities also, मतलब यहां पे खाली कौन सा इंटरेस्ट कवर्ड है? इंटरेस्ट फ्रॉम अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी. लेकिन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मिला या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिला, वो भी डिडक्शन बन जाएगा इफ योर जीटीआई इज अप टू रुपीज 20,000. इज दैट क्लियर? एंड द लास्ट एंड द मोस्ट, सबसेक्शन 3 इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू, क्योंकि ये कुछ सेक्शन व्हिच आर अर्लियर डिलीटेड, दे आर बीइंग कोटेड out here. The provisions of this section shall not apply to any cooperative bank other than a primary agriculture credit society or a primary cooperative agriculture and rural development bank. Primary agriculture credit society and primary cooperative agriculture and rural development bank, ये दो eligible है even if they are doing cooperative banking activity. Any other cooperative bank is disqualified. मतलब credit facilities to your members you are giving, that is okay. लेकिन अगर आप आउटसाइड में आप कोऑपरेटिव बैंकिंग बिजनेस कर रहे हो तो ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा. द रेस्ट इज ओनली सम एक्सप्लेनेशन. दिस वाज रिक्वायर्ड टू बी डिस्कस टू अ ब्रीफ एक्सटेंट दैट यू अंडरस्टैंड कोऑपरेटिव बैंक को डिडक्शन नहीं मिलता है, लेकिन उसमें पीएसीएस एंड पी कार्ड का एक्सेप्शन है. अदर सोसाइटीज में लॉट ऑफ बिजनेसेस का यू गेट डिडक्शन, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. नाउ दैट वी गो टू अवर
RTP किधर गया ब्रो? 1 सेकेंड प्लीज, चल ना ब्रो, सबको लेट हो रहा है, सीए फाइनल का एग्जाम है, किधर गया? CA final RTP November 2023. Alright, so this is the RTP. First case scenario is not the ATP related case scenario. In fact, आप देखोगे तो मैंने आपके लिए ये RTP पूरा solve भी कर दिया है. And by the way, before recording of this lecture, the RTP is already, this solutions का PDF is already uploaded on Telegram. But we will come to the solution later. पहले question देख लेते हैं. मैंने ना आपको in the past also when I have released a lot of MCQ lectures, case scenario वाले MCQ solve करने का एक hidden trick बताया. केस सिनेरियो वाला. सर क्या है वो हिडन ट्रिक? सर जब इतना बड़ा स्टोरी दिया है ना, सच अ बिग स्टोरी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टोरी यू हैव टू आंसर 6 क्वेश्चंस. अगर आपको मतलब इट कैन समटाइम्स बैकफायर आल्सो, ये यू नो इट्स अ डबल एज्ड स्वॉर्ड. अगर आपको टाइम बचाना है ना, पहले क्वेश्चन पढ़ लो विदाउट ब्लडी हेल एनी नॉलेज. सी आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ डिस्क्लेमर. If you are comfortable to follow this, you do. Otherwise, generally people do what? ये पूरा ये read करके एक एक चीज इंटरप्रेट करते हैं. Then they read the question. अब it is possible कि इसमें से कोई डेटा relevant ही नहीं है to the questions that they are asking. Ultimately, we have to answer these questions. No, ये क्वेश्चन का आंसर देंगे. This is street smartness. If you are comfortable, then you do that. I am street smart. You may or may not be. So if you believe in the normal hard work वाला attitude, you read the full paragraph first, then you come here. Otherwise, मेरा system थोड़ा अलग है. I just go through the question so that I know while reading the case scenario, ये वाला केस सिनेरियो, आई नो कौन सा डेटा आई हैव टू पे अटेंशन टू, कौन सा आई डोंट हैव टू. सो इज द एक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर इन एंटरिंग प्रीमाइसेस ऑफ ए लिमिटेड एट 9 PM एंड कंटिन्यूइंग सर्वे, मतलब ए लिमिटेड करके कोई कंपनी होगी जिसके इधर सर्वे हुआ है, टिल 11 PM वैलिड. ऑल्सो इज द एक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर इन एंटरिंग प्रीमाइसेस ऑफ बी लिमिटेड एट 8:30 PM वैलिड. तो ये ऑप्शंस तो हम बाद में देखेंगे. मतलब असेसिंग ऑफिसर हैज एंटर द प्रीमाइसेस ऑफ कंपनीज एट सर्टेन टाइम, एक का 9 PM, एक का 8:30, इज दैट वैलिड? Is the action of the assessing officer impounding and retaining the books of accounts and other documents of A Limited, B Limited after recording reasons for doing so, where he had not taken specific permission for CCIT? तो is the action of the assessing officer books रखने का, मतलब पहला क्वेश्चन is entry valid है क्या, दूसरा क्वेश्चन है books रखने का valid है क्या, again for the same two companies A Limited and B Limited. Okay. Can assessing officer issue notice under section 148, which is the reopening का notice, in August 22 in respect of AI 1920, 2021, 21, 22. So this is now the time limit of sending your income escaping assessment वाला notice. मतलब एक चीज तो मैं समझ गया, these are all cases of search, seizure, survey operations. A limited, B limited. पहले assessing officer entry मार रहा है, is that valid? Books impound कर रहा है, custody of books, is that valid? Then reopening notice कितने साल का भेज सकते हैं, so that time limit will be tested. Would the action of assessing officer in entering premises of A limited at 9 PM and impounding retaining books of accounts be valid if he had surveyed A limited only for purpose of verifying whether the TDS has been collected? मतलब जो नॉर्मल सर्वे होता है उसकी जगह पे TDS का सर्वे हुआ तो क्या चेंजेस होता है, दैट इज बीइंग टेस्टेड. तो अगेन दैट सर्च सीजर वाला कॉन्सेप्ट, TDS सर्वे इज डिफरेंट, उसके अंदर पावर्स थोड़े से कम हो जाते हैं, सर्टेन पावर्स आर नॉट अवेलेबल. कैन द असेसिंग ऑफिसर इशू नोटिस अंडर 148 फॉर ब्रिंगिंग टू टैक्स इनकम एस्केपिंग असेसमेंट? अच्छा, सी लिमिटेड थर्ड कंपनी इज ऑल्सो गिवन विदाउट फॉलोइंग द कंप्लायंसेस स्टिपुलेटेड अंडर 148 है. हमको पता है प्रोसीजर इज गिवन इन 148 है, देन नोटिस अंडर 148. तो कैन वी डू दैट? ये तीसरा कंपनी है सी लिमिटेड, टिल नाउ ऑल द क्वेश्चंस वेर ऑन A and B, so can that be done? And finally, can assessing officer issue notice under 148 for bringing to tax income escaping assessment against C limited? मतलब लास्ट के दो क्वेश्चन है 5 and 6, they are for the data of C limited. तो अब आप समझेंगे जरा प्लीज कि लास्ट दो क्वेश्चन आंसर करने के लिए आई विल फोकस ओनली ऑन C limited का डेटा, ऊपर के क्वेश्चंस के लिए आई विल इग्नोर C limited का डेटा, फोकस ओनली ऑन A limited, B limited का डेटा. वंस आई रीड द क्वेश्चंस नो, आई नो के केस सिनेरियो रीड करने में व्हाट आई हैव टू पे अटेंशन टू, एंड दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लेडीज एंड. ओके, तो इफ द फॉलोइंग कंप्लायंसेस विदाउट फॉलोइंग द कंप्लायंसेस ऑफ 148 है, मतलब क्या बिना प्रोसीजर के 148 की नोटिस आ सकती है? शेयर्स परचेज इन 16-17 वर्थ 30 lakhs इंस्टेड ऑफ 28 लाख, मतलब कुछ डेटा चेंज होगा, तो मेन डेटा वी हैव टू रीड ओनली. अब देखते हैं कि मेन केस सिनेरियो में दिया क्या है. द असेसिंग ऑफिसर विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ CCIT सर्वेड, मतलब सर्वे किया ए लिमिटेड के इधर, मैं समझ गया ए लिमिटेड इज अ 133 A का सर्वे विच वॉज विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन एट 9 PM. तो पहला क्वेश्चन आंसर करने के लिए मेरे को डेटा मिल रहा है. ओके, सर्वे एट बिजनेस प्रीमाइसेस कैन बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स. बिजनेस प्रीमाइसेस वर्किंग आवर्स, हेलो, देखते हैं इसका वर्किंग आवर्स क्या रहेगा.
on 1st June 22 for the purpose of obtaining information which may be relevant to the proceedings under the Income Tax Act. A लिमिटेड का डेटा. The survey continued till 11 PM, मतलब 9 PM से 11 PM. वैसे भी restriction is always on entry, there is no restriction on exit. तो 9 PM के entry का ही हमको चेक करना. On 15 June 22, the assessing officer entered the business premises of B Limited, which was also within its jurisdiction. ये entry 8:30 को हुआ. For the purpose of collecting information, purpose of collecting information मतलब ये हो गया आपका door to door survey. डोर टू डोर सर्वे में भी बिजनेस प्रीमाइसेस में यू कैन एंटर ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, लेकिन बुक्स का कस्टडी लेने का क्वेश्चन यू नो सेकंड क्वेश्चन. सो वी नो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एंट्री, इसका 9 PM, इसका 8:30 PM. एग्जिट में देयर इज नेवर अ रूल. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट इंपाउंडिंग, दैट इज टेकिंग कस्टडी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स. तो ये 133B है, इसका कस्टडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का नहीं होगा, ओनली वन पावर फॉर्म 45D. ओके. And left the premises at 9:30. वैसे भी लीविंग का वी आर इररेलेवेंट, लीविंग का एब्सोल्युटली इररेलेवेंट, हमको एंट्री का ही देखना. द बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ ए लिमिटेड इज केप्ट ओपन फॉर बिजनेस एवरी डे बिटवीन 10 AM to 10 PM. मतलब ये ऑफिस आवर्स के अंदर एंट्री मारा है, वैलिड हो गया. एंड बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ बी लिमिटेड इज केप्ट ओपन 9:30 AM to 9:30 PM. मतलब ये भी ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स. बोथ एंट्रीज आर टेकन ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स. In both the above cases, the assessing officer impounded and retained in custody for a period of 12 days inclusive of holidays, मतलब total 12 days. Books of accounts and other documents inspected by him after recording the reasons for doing so. 12 days का impounding किया. However, he did not take specific permission from chief commissioner. मतलब permission लिए बिना इसने रखा. चलिए देखते हैं. Can he keep it? क्योंकि हमको पता है 15 वर्किंग डेज का रिटेंशन इज 133 है. एक्सटेंशन चाहिए, परमिशन लगता है. एंड देन इन 133B तो impounding का पावर ओनली इज नॉट अवेलेबल. करेक्ट है. In July 22, the business premises of C Limited was searched. C becomes a case of 132. ये डेटा C Limited के लिए for question number 5 and 6. ये डेटा A and B है for question number 1 to 3. ऐसे केस सिनेरियो पढ़ना पड़ता है. So you know the questions, you are able to answer this. That is what we want. That is what we want you to do. Search after due procedure laid down under 132. मतलब information, authorization, search. Consequent to which AO has in his possession certain documents showing information pertaining to shares of the value 28 lakh purchased in 16-17 and 21 lakh purchased in 17-18. मतलब 28 plus 21 49 lakhs का investment in shares 16-17. मित्रों 3 years और 10 years reassessment notice कितने टाइम का आ सकता है? 3 years from the end of the relevant assessment year or 10 years? Normal is 3 years from assessment year. ये PY 16-17 मतलब AY 17-18. यहां से 3 साल करोगे तो 31 मार्च 21 होता है. When was this done? 22. एंड ये क्या है? PY 17-18. AY 18-19. यहां से 3 years भी करोगे तो 31 मार्च 22. मतलब this date and this date मतलब this year 16-17 एंड 17-18 का 148 का नोटिस भेजने का टाइम इज गॉन, क्योंकि ये टोटल 50 लाख टच नहीं कर रहा. इफ undisclosed income is converted into asset, loans and advances, deposit in a bank account, shares and securities, कुछ याद आता है, immovable property, transactions relating to an occasion or event. अगर 50 टच करता है तो 10 years हो जाए, नहीं तो 3 रहेगा. तो लास्ट क्वेश्चन में पता है इसको 28 को चेंज करके 30 किया तो इट विल बिकम 51 लाख. मतलब 5th क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा कि आप 3 years से ज्यादा का रीअसेसमेंट नहीं भेज सकते 148 का नोटिस. लेकिन अगर 51 लाख होगा विच इज द लास्ट क्वेश्चन, तो वी विल चेंज अवर आंसर. दिस इज व्हाई वी एक्चुअली रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट. वी नो हाउ टू इंटरप्रेट. तो देखते हैं. इज द एक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर एंटरिंग इन बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ ए लिमिटेड एट 9 PM. इट इज ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, क्योंकि इसके वर्किंग आवर्स क्या है 10 AM to 10 PM. एंड कंटिन्यूइंग सर्विस. सी एंड का कोई रूल ही नहीं, द एंट्री का रूल. तो टिल व्हाट टाइम इट कंटिन्यूड इज इररिलेवेंट. एंट्री इज ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स. एंड बी लिमिटेड का 8:30. बी लिमिटेड का भी टाइमिंग क्या है 9:30 AM to 9:30 PM. तो कैन आई से दे हैव एंटर्ड ड्यूरिंग द टाइम. तो मित्रों एंट्री ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स वैलिड फॉर बोथ. आपका ऑप्शन ए रहेगा. यस इट इज वैलिड इन बोथ केसेस. व्हाट इज योर आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन? यस इट इज गोइंग टू बी वैलिड इन both cases because the entry was taken during the working hours. Second, is the action of AO in impounding and retaining books of accounts and other documents of A Limited, B Limited after recording reasons valid because he has not taken permission. A Limited का 12 days के लिए रिटर्न किया, B Limited का भी रिटर्न किया. Is that valid? अब यहाँ पे आपका सेक्शन का नॉलेज आएगा. A Limited का up to 15 days कर सकता है,
वैलिड है, लेकिन बी लिमिटेड के अंदर वो पावर ही नहीं है, बिकॉज द पावर टू इंपाउंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज ओनली इन 133A. इतना आप समझ गए. ए लिमिटेड इज अ केस ऑफ 133A, बी लिमिटेड इज अ केस ऑफ 133B, सी लिमिटेड इज अ केस ऑफ 132. तो ए लिमिटेड का इंपाउंड कर सकता है, बी का इंपाउंड नहीं कर सकता है. सो दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन सी. Action is valid in case of A limited but not valid in case of B limited. Can he issue notice in August 22 with respect to AY 1920? AY 1920 मतलब 3 साल. Yes or no? AY 2021, AY 21-22 एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर से 3 साल का टाइम लिमिट लगता है. एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर से 3 साल. फॉर सर्वे अंडर सेक्शन 133A 148A का प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा. 148A का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड फॉर सर्च. सर्वे के लिए आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. यस और नो? तो ही कैन डू दैट बट प्रोवाइडेड ही फॉलोज 148A का प्रोसीजर. द प्रोसीजर ऑफ 148A इज नॉट टू बी फॉलोड इन केस ऑफ सर्च. इट हैज टू बी फॉलोड इन केस ऑफ सर्वे. Not to be followed in case of search, but it has to be followed in case of survey. And accordingly, no is wrong. Compliance of 148A is not necessary is wrong. He can, क्योंकि तीनों 3 साल के लिमिट के अंदर आ रहा है. यहां से 3 साल करोगे तो 23 आएगा, 24 आएगा, 25 आएगा. We are doing in 22 only. So allowed तो है, लेकिन he has to follow 148A का प्रोसीजर, and thus आपका आंसर रहेगा ऑप्शन C, because he has to follow the compliances. Next, would action of assessing officer in entering the premises of A limited at 9 p.m. and impounding and returning books of accounts be valid if he had surveyed only for the purpose of TDS? क्या TDS के सर्वे में ये वाले पावर रहते हैं? TDS का सर्वे has to be between sunrise and sunset. TDS का सर्वे cannot happen during working hours. It has to be during between sunrise and sunset. और TDS के सर्वे में impounding का पावर भी अलाउड नहीं है. तो यही जो सर्वे 133A का है, अगर आपने ये TDS के काम के लिए किया है तो 2 चेंजेस टेक प्लेस. चेंज नंबर 1, द एंट्री का वर्किंग आवर्स का रूल नहीं है. टीडीएस के सर्वे में एंट्री का रूल इज बिटवीन सनराइज एंड सनसेट. एंड रूल नंबर 2, यू कैन नॉट इंपाउंड. बिकॉज ऑफ दिस एक्शन इज रॉन्ग इन एंटरिंग द प्रीमाइसेस ऑल्सो एंड ऑल्सो रिटेनिंग. बोथ एक्शंस आर रॉन्ग. मैं वापस एक बार लॉ बता दूं. फॉर टीडीएस सर्वे द एंट्री का टाइम इज नॉट वर्किंग आवर्स, इट इज बिटवीन सनराइज एंड सनसेट. तो अभी 9:30 PM को सनसेट हो जाएगा, अनलेस इट इज अ यूरोपियन कंट्री. हम लोग यूरोप में होता है रात को 10 बजे सनसेट होता है. ये इंडिया है. ओके, सनसेट हो गया, यू कांट एंटर. एंड रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी वैलिड नहीं. कैन असेसिंग ऑफिसर इशू नोटिस अंडर 148 फॉर ब्रिंगिंग इनकम एस्केपिंग असेसमेंट विदाउट फॉलोइंग द कंप्लायंसेस अंडर 148A? सी लिमिटेड इज अ केस ऑफ सर्च. सर्च के लिए रूल क्या है? 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर. सर्च के लिए टाइम लिमिट इज 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर. हेलो, तो वैसे बिना फॉलो किए दे सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली सी लिमिटेड का इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कौन से ईयर्स का दिया है? PY 16-17, PY 17-18. मतलब AY 17-18 एंड AY 18-19. यहां से जब आप 3 years करोगे तो यू विल गेट 31 March 21 एंड 31 March 22. हमने किया सर्च इन जुलाई 22. दैट मीन्स द टाइम लिमिट्स हैव गॉन. वैसे बिना प्रोसीजर के आप कर सकते हो नोटिस, लेकिन here you will not be allowed to do so since the 3 year time limit from the end of the relevant year has escaped. because ये 3 years का time limit expire हो गया है, आपको ये करना अलाउड नहीं रहेगा. 3 years का time limit expire and therefore it is not going to be allowed. and what if last case में 30 instead of 28 lakhs, तो 30 plus 21 आपका 51 हो जाएगा. जब भी 51 होता है then he can do that. and in fact उसके लिए आपको प्रोसेस भी फॉलो करने का जरूरत नहीं है. दिस इज 50 lakhs और मोर, तो 10 years फॉलो करना है. एंड यस, ही कैन डू सो विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी. 148A का प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है, लेकिन हायर अथॉरिटी का परमिशन हैज टू बी टेकन एंड अकॉर्डिंगली इट इज गोइंग टू बी A. So this is how we are going to understand and interpret our case study based MCQs, so that case study based MCQs के अंदर आपको अगर क्वेश्चन पहले से पता है तो the time taken will be very easy. It is my humble request to all the students who are giving the CA final exam. सबसे पहले आप आपका 70 marks का पेपर कंप्लीट करें. First thing is that, because in that, supposingly you go wrong in any step, no, God forbid, you still get marks for the other steps that you have done correctly. Here, if you do one step wrong, you're, not just that question, but other questions also sometimes get affected. So it is my humble request to you. Please
सॉल्व 70 मार्क्स पर, वो 70 में से कैसे भी करके आप आपका 40-45 लेके आओ। फिर इन द एमसीक्यूज आप जितना ज्यादा इन द एमसीक्यूज ऑल्सो फर्स्ट डू द वन सिंगल वाला एमसीक्यूज, नॉट द केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज इज द लास्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू में जो टाइम कंज्यूम होता है दैट प्रिजुडिशियली अफेक्ट्स द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पेपर। ट्रिक बहुत सिंपल है, पहले आप आपका 70 मार्क्स पेपर लिखेंगे, देन आप आपके सिंगल वाले एमसीक्यू करेंगे, फाइनली आप आपके टाइम परमिट करता है तो आप आपके केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू करेंगे। इट इज गोइंग टू ड्रास्टिकली चेंज योर मार्क्स स्कोरिंग, आई एम टेलिंग यू। ओके, सो नाउ वी विल गो टू अवर सेकंड केस स्टडी। The second case scenario, ladies and gentlemen, is on the ATP deduction, which is why we also had a discussion on it. But as we decided to follow a system, हम पहले question देख लेते हैं। So there must be multiple, cooperative societies. Alpha बोला है, gamma बोला है, alpha gamma बोला है, तो beta भी होएगा ही, पक्की बात है। Would alpha cooperative and gamma cooperative be entitled to deduction under ATP if they don't opt for 115 BAD? Bro, हमको इतना तो मालूम है that new taxation regime we don't get deduction. तो बट ऑब्वियस है कि अगर ओल्ड रेजिम लिया देन ओनली दैट क्वेश्चन अप्लाइज, वुड दे बी एलिजिबल? तो डेटा देखेंगे ना बाद में। सो नाउ व्हेन आई फोकस ऑन अल्फा एंड गामा, आई जस्ट हैव टू सी वेदर दे आर एलिजिबल। देखते, वुड प्रोविजंस ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स बी अट्रैक्टेड इन केस ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा इफ दे डोंट ऑप्ट? देखो, दो ऑप्ट फॉर न्यू रेजिम, हमको इतना तो पता है न्यू रेजिम में एएमटी इज नॉट एप्लीकेबल। अगर अप्लाई करेगा तो ओल्ड रेजिम में ही अप्लाई करेगा। तो जिसने डिडक्शन लिया है, इनकम रिलेटेड डिडक्शन एटीपी, उसको एएमटी लगता है क्या? हाँ, इन अल्टरनेट मिनिमम टैक्स वी ऐड बैक 3 थिंग्स: 1 SEZ डिडक्शन, 2 3580, 3 इनकम रिलेटेड डिडक्शन बट नॉट बीइंग एटीपी। तो समवेयर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर विल डिसाइड द सेकेंड क्वेश्चन whether AMT is applicable or not applicable for all the 3 they are asking। मतलब ATP का डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, they are asking only for alpha and gamma, but AMT will apply or no, they are asking for alpha, beta, gamma all 3। चलो देख लेंगे। थर्ड, what would be the tax liability rounded off of beta cooperative society if it opts for 115 BAD? ऑप्ट किया मतलब ATP का डिडक्शन नहीं लिया, and it is assumed that the gross total income is same under normal provisions and 115 BAD। तो डिफरेंस क्या होगा? ग्रॉस टोटल इनकम करो, ओल्ड रेजिम में भी सप्रेक 115, ये ओल्ड रेजिम में भी सप्रेक एटीपी का डिडक्शन, बट न्यू रेजिम के हिसाब से पूछा है तो वी डोंट सप्रेक। एंड ऑफ कोर्स इतना तो हमको पता है 115 BAD मतलब 22 + 10 + 4। व्हाट वुड बी द टैक्स लायबिलिटी राउंडेड ऑफ बीटा कोऑपरेटिव सोसाइटी इफ इट डज नॉट ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 BAD? मतलब ओल्ड रेजिम में रहेगा, डिडक्शन लेगा तो अकॉर्डिंगली इसको ओल्ड रेजिम के हिसाब से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्लैब्स है वो लगा करना। Would it be beneficial for alpha, beta and gamma to opt for? अरे तेरी, मतलब would it be beneficial कैसे डिसाइड करोगे? How will you decide for alpha, beta और gamma? Calculate tax as per old, calculate tax as per new, old में take deduction and calculate as per old, new में don't take deduction। जो lower होगा वो हमारा आंसर होगा। मतलब फॉर ऑल द 3 सोसाइटीज यू हैव टू कैलकुलेट ऑल द 2 टैक्स, मतलब 6 टैक्स टोटल, अल्फा का ओल्ड न्यू, बीटा का ओल्ड न्यू, गामा का ओल्ड न्यू, एंड फाइनली डिसाइड कि किसके लिए ओल्ड बेटर, किसके लिए न्यू बेटर। भाई साहब तगड़ा केस है, मजा आ जाएगा। चलिए देखते हैं व्हाट डू वी हैव। वंस यू हैव सुपरविजन नॉलेज आल्सो ऑफ एटीपी यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। फॉलोइंग आर डिटेल्स अबाउट अल्फा रिफर्ड टू एज अल्फा कॉप, बीटा सोसाइटी एज बीटा कॉप एंड गामा। मतलब 3 सोसाइटी का क्वेश्चन है, हमने ऑलरेडी देख लिया। Alpha cooperative society is engaged in providing credit facilities solely to its members. The profits from this were 20 lakhs. Computed profits है, मतलब डायरेक्टली आपको पीजीबीपी लिखना है। And also derives interest of 3 lakh from investment in Delta। ये चौथा ही कोई सोसाइटी है, सोसाइटी टू सोसाइटी का डिडक्शन भी मिलता है। मतलब 20 लाख का is interest from 20 lakh का is PGBP from credit facilities of own members. This is entitled for ATP and 3 lakh also। मतलब इसका GTI 23 लाख होगा और इसको डिडक्शन भी 23 मिल जाएगा। तो दैट मींस ओल्ड रेजिम में तो इसका टैक्स 0 आएगा और एटीपी के ऊपर एएमटी लगता नहीं है, तो विदाउट एएमटी आल्सो 0। मतलब इसके लिए तो पक्का ओल्ड रेजिम बेटर। बट वो तो लास्ट क्वेश्चन है ब्रो। पहले क्वेश्चन ने ये पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग वेदर दे कैन टेक एटीपी। तो अल्फा कैन तो डेफिनेटली टेक, ऑन 20 आल्सो इट कैन टेक एंड 3 आल्सो, बिकॉज सोसाइटी टू सोसाइटी का डिडक्शन मिलता है। करेक्ट है। नेक्स्ट, बीटा इज एंगेज्ड इन मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर्स, प्रॉफिट ऑफ 40 लाख। मतलब ये भी एटीपी के लिए एलिजिबल है। अल्फा इज एलिजिबल, बीटा इज एलिजिबल।
It has employed 8 new employees with salary of 22,000 per month on 1st July. Oh, टिडिंग 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 80 डबल जे डबल है, मतलब 40 लाख का प्रॉफिट। इस 40 लाख के अंदर वी विल गिव 80p का डिडक्शन भी, वी विल गिव 80 डबल जे डबल ए का डिडक्शन। 22,000 इज विद इन द लिमिट ऑफ 80 डबल जे डबल ए का 25,000 का सैलरी 1 जून को अपॉइंट किया है, मतलब आपका 240 डेज का क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है। सैलरी इज पेड बाय ईसीएस, मतलब दैट इज आल्सो फुलफिल्ड। टैक्स ऑडिट इज आल्सो एप्लीकेबल, ऑल कंडीशंस ऑफ 80 डबल जे डबल आर फुलफिल्ड। And it also earns 12 lakh interest on FD of Axis and ICICI, मतलब ये 40 लाख आपके 80p के लिए एलिजिबल है। आपने जो लोगों को नौकरी दिया है वो 80 डबल जे डबल ए के लिए एलिजिबल है, लेकिन ये 12 लाख रुपीस का आपका जो इंटरेस्ट है ये डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब बीटा का तो भारी कैलकुलेशन है भाई। ओल्ड में वी विल टेक 80p 80 डबल जे डबल ए एंड कैलकुलेट नॉर्मल टैक्स, एड बैक 80 डबल जे डबल ए एंड कैलकुलेट अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। Then new में don't take the deductions, but in new 80 डबल जे डबल आएगा भाई साहब। ओल्ड में there are two options, normal and AMT. In normal take 80p and 80 डबल जे डबल है both. In AMT add back 80 डबल जे डबल है क्योंकि 80p पे AMT नहीं लगता है। And then go in new regime, in that take 80 डबल जे डबल है but don't take 80p। बाप रे बाप, चल मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, वो ठीक है, भारी है ब्रो। गामा कोऑपरेटिव इज एंगेज इन बैंकिंग बिजनेस। अरे ये तो कोऑपरेटिव बैंक है, इसको तो कोई डिडक्शन नहीं है ब्रो। चल निकल इधर से। द प्रॉफिट्स आर 110 lakhs. It also gets its books of account audited and it is not a primary agricultural credit society or primary agriculture cooperative. देखो कोऑपरेटिव बैंक को अलाउड नहीं है, लेकिन पीएसीएस एंड पिकार्ड को एलिजिबल है ना। मतलब एक बात पक्का है कि गामा को एटीपी नहीं मिलेगा, एल्फा को मिलेगा, बीटा को मिलेगा, लेकिन गामा को नहीं मिलेगा। वैसे भी पहला क्वेश्चन इज अबाउट अल्फा एंड गामा, सो वी नो द आंसर नाउ। Would alpha and gamma be entitled to deduction under 80p? Alpha will be eligible किसका? 20 lakhs का business profit also and 3 lakh का because it is from other society, 23 lakh पूरा, लेकिन gamma is not entitled। तो alpha only for 3 lakh not for 20, gamma ये wrong है। alpha is entitled only for 20 not for 3, ये wrong है। alpha is entitled to 80p for both, gamma is entitled to deduction, ये भी wrong है bro, ये भी wrong है। Which only means that alpha is entitled to deduction of 80p for entire 23 lakhs and gamma is not eligible. Alpha is eligible activity 20 and 3, मतलब पूरा मिलेगा, and gamma cooperative bank है तो 80p नहीं मिलेगा, ऑप्शन डी। समझा? नेक्स्ट, would the provisions of AMT be attracted in case of alpha, beta and gamma? Alpha is only taking 80p का डिडक्शन, ये तो एड बैक करना ही नहीं है। हमको किसको एड बैक करना होता है? किसको एड बैक करना होता है? एक anybody who has taken SEZ का डिडक्शन, वो इसमें से कोई नहीं। anybody who has taken 35 AD का डिडक्शन, वो कोई नहीं। anybody who has taken income related chapter 6 से डिडक्शन other than TTA, TTB and other than 80p, करेक्ट है क्या नहीं? तो अल्फा ने तो सिर्फ 80p लिया है, क्योंकि सिर्फ 80p लिया है AMT नहीं लगेगा। गामा ने 80p नहीं लिया, गामा ने तो कोई डिडक्शन ही नहीं लिया, जो डिडक्शन नहीं लेगा उसको भी AMT नहीं लगेगा। बीटा इज गोइंग टू टेक 80p एंड 80 डबल जे डबल ए बोथ, बीटा इज गोइंग टू टेक बोथ। 80p के ऊपर तो फिर भी AMT नहीं लगता है, लेकिन 80 डबल जे डबल ए पे AMT लगेगा, which means AMT provisions will be applicable only in case of beta. Let me show you the explanation. Alpha has taken only 80p, which is excluded from AMT. Gamma has to not taken any deduction only, so no AMT. Beta has taken 80 डबल जे डबल ए एंड 80p, 80p पे AMT नहीं लगेगा, लेकिन 80 डबल जे डबल ए पे तो लगेगा। So beta is the only company जिसके ऊपर लगेगा, and therefore the option is going to be only beta is going to be liable. Next, what would be the tax liability rounded off for beta for AY 23-24 if it opts for the new taxation regime? देख न्यू टैक्सेशन regime लिया ना, तो भी 80 डबल जे डबल ए मिलेगा ब्रो, क्या नहीं मिलेगा? 80p नहीं मिलेगा। तो न्यू टैक्सेशन रेजिम का 22.168 के हिसाब से सीधा कैलकुलेशन ही बताता हूं। पीजीबीपी में बीटा हैज गॉट 40 lakhs एंड एफडी इंटरेस्ट 12 लाख, दो ही तो इनकम दिया है। बीटा का डेटा देखो ना, 40 lakhs एंड 12 lakhs, ये 12 लाख के ऊपर कोई 80p भी नहीं मिलता। वैसे भी न्यू रेजिम पूछा है तो लेना भी नहीं है। 80 डबल जे डबल है, विल इट बी अलाउड? यस, बिकॉज न्यू रेजिम अलाउज 80 डबल जे डबल है। आप एमसीक्यू में तो आप प्रिपेयर्ड रहिए, 80 डबल जे डबल है तो आना ही आना है। ओके, 22,000 इज द सैलरी मित्रों,
22,000 इज द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज. ये 22,000 is paid for 10 months जून से लगाकर मार्च तक to 8 employees. See, there are 8 new employees. 22,000 appointed from जून. इसका 30% होगा, खाली 30% रह गया. You will get your deduction of 5,28,000. NTTI 46,72 और उसके ऊपर जब आप 25.168% करेंगे on 46,72,000 you will get 11,75,848 जो राउंडेड ऑफ करके 1175 आपका राउंड ऑफ करके आपका 1175,850 is going to be available to you in your option D. 1175,850. What will be the tax liability if it does not opt for 115 BAD? तो वो जो लास्ट क्वेश्चन है ना कि whether they should opt or not opt, इसका बीटा का आंसर तो इधर ही पता चल जाएगा. अल्फा का लेट मी बी वेरी क्लियर, इट इज बेटर टू नॉट ऑप्ट, क्योंकि नॉट ऑप्ट किया तो आप ओल्ड रेजिम में रहेंगे. ओल्ड रेजिम में रहेंगे तो आपका पूरा डिडक्शन है एंड देयर इज नो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स. तो अल्फा का डेफिनेटली ओल्ड रेजिम इज बेटर. बीटा का वी विल सी ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर वी विल कम टू नो. इसका न्यू रेजिम का टैक्स तो पता चल गया, ओल्ड रेजिम का कितना टैक्स आ रहा है वो पता चलेगा तो ऑटोमेटिकली बीटा का पता चल जाएगा. देन तो गामा का भी नो, गामा हैज नॉट टेकन एनी डिडक्शन एंड बिकॉज गामा हैज नॉट अगेन टेकन एनी डिडक्शन तो उसका भी कैलकुलेशन में 25.168 इज ओनली गोइंग टू बी बेटर. तो होल थिंग इज दैट अल्फा का पक्का ओल्ड इज बेटर, गामा का पक्का न्यू इज बेटर. बीटा का क्या है वो पता चल जाएगा. इफ इट डज नॉट ऑफ तो क्या होगा? इट स्टेज इन ओल्ड रेजिम, दैट मींस इट कैन टेक 80p, इट कैन आल्सो टेक 80 JJA. अकॉर्डिंगली आपका आंसर क्या रहेगा? द नेट टैक्सेबल टोटल इनकम विच यू गॉट एज पर 115 BAD इज 46,72,000. उसमें आपने 80p का डिडक्शन नहीं लिया. नाउ यू टेक 80p का भी डिडक्शन, दैट इज 40 लाख रुपीज. तो यू विल बी लेफ्ट विथ 6,72,000. ओल्ड रेजिम में आपको इसका भी डिडक्शन मिल जाएगा. फर्स्ट 10,000 10%, नेक्स्ट 10,000 20% एंड बैलेंस के ऊपर 30%. इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो आपको 206,540 आपका आंसर दैट इज ऑप्शन बी मिल जाएगा. ओके, नेक्स्ट ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स भी करना पड़ेगा ना. यू विल हैव टू डू ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स. सो इफ दैट ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स इज हायर देन, एक बार वो हमको करना पड़ेगा. एडजस्टेड टोटल इनकम इज 672, एड बैक 80 JJA. बिकॉज 80p तो एड बैक नहीं करना पड़ता है. 12 लाख के ऊपर 15% बिकॉज इट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्लस 4% 187,200. सो नॉर्मल टैक्स 206,540 और AMT विच एवर इज हायर के हिसाब से 206,540 इज गोइंग टू बिकम योर answer. So while you are doing your old regime, you have to also do alternate minimum tax का calculation. And then last question में they are asking us किसके लिए क्या लेना बेटर रहेगा. एटलीस्ट बीटा के लिए ओल्ड रेजिम में इसका क्या टैक्स आ रहा है 206,540 एंड न्यू रेजिम में इसका क्या टैक्स आया था 1175,880. तो वी कैन क्लियरली सी कि बीटा के लिए तो ओल्ड इज बेटर. अल्फा के लिए ओल्ड में टैक्स 0 आ रहा है, न्यू में जो भी आएगा अल्फा के लिए भी ओल्ड ही बेटर रहेगा. करेक्ट है. अगर मैं गामा की बात करूं तो ओल्ड में आपका दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट. 20,000 के ऊपर 3,000 आएगा, बैलेंस के ऊपर 30%. यू विल ऐड सरचार्ज बिकॉज द इनकम इज क्रॉसिंग 1 करोड़. यू विल ऐड सेस, दिस इज गोइंग टू बी योर टैक्स. यही अगर आप न्यू रेजिम में करोगे तो डायरेक्टली 25.168. तो आपको गामा के लिए न्यू लेना है एंड अल्फा एंड बीटा के लिए ओल्ड लेना है. यू हैव टू टेक गामा के लिए न्यू एंड अल्फा एंड बीटा के लिए old. So gamma should go for 115 BAD, but alpha and beta should stay old. वैसे आपका प्रीवियस 2 क्वेश्चंस का आंसर अगर करेक्ट आता है तो ऑटोमेटिकली आपने बाय नाउ यू ऑलरेडी हैव द आंसर. एंड दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ योर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, जहां पे अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो सब्सिक्वेंटली ऑल अदर क्वेश्चंस आर आल्सो गोइंग टू गो रॉन्ग. नेक्स्ट दिस क्वेश्चन इज ऑन 194R. अब ये सब ना इंडिपेंडेंट सिंगल क्वेश्चन है. 194R. 194R के बारे में हमको इतना तो पता है दैट व्हेनेवर वी आर प्रोवाइडिंग परक्यूजिट इन कोर्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, एक होता है परक्यूजिट टू एम्प्लॉइज विच इज टैक्सेबल अंडर सैलरी, बट परक्यूजिट टू अ प्रोफेशनल अगर हमने प्रोवाइड किया, कोचिंग क्लास ने एक इंडिपेंडेंट प्रोफेसर रखा, उसको प्रोफेशनल फीस तो दे रहा है बट दे आर ऑल्सो पेइंग हिम यू नो सम एक्स्ट्रा, हॉलीडे का पैसा दे दिया ऐसा कुछ. तो 194R मोर देन 20,000 हुआ. तो इसके बारे में एक लेटेस्ट सर्कुलर हैज बीन रिलीज्ड. इस सर्कुलर के अंदर they have given some conditions कि सपोजिंगली आपके स्पाउस को लेके गए with respect to a dealer conference. So there is a company, उसने अपने डीलर्स को एक कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया that we will educate you about the business. That way देखोगे तो डीलर का कोई फायदा नहीं हो रहा है ना इसमें.
देयर इज नो बेनिफिट टू द डीलर। लेकिन इफ द डीलर का स्पाउस अकम्पनीज, इट बिकम्स लाइक अ बिजनेस ट्रिप कम हॉलिडे एंड द कंपनी इज पेइंग फॉर योर स्पाउस का खाना पीना रहना एवरीथिंग, तो स्पाउस का एंटायर एक्सपेंडिचर इज गोइंग टू बी अ परक्यूजिट, वो एक्स्ट्रा मिला। फिर सपोजिंगली आपका कॉन्फ्रेंस 2 दिन का है, लेकिन कंपनी ने आपको 5 दिन के लिए इन्वाइट किया कि 2 दिन कॉन्फ्रेंस अटेंड करना, 3 days यू कैन एंजॉय, तो अगेन दैट एक्स्ट्रा 3 days का पैसा दैट द कंपनी इज गिविंग, दैट आल्सो बिकम्स अ परक्यूजिट। इसको एक्सप्लेन करने के लिए दे हैव गिवन अ सर्कुलर। इन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन आई विल आल्सो एक्सप्लेन द सर्कुलर। सो एबीसी हेल्ड अ डीलर कॉन्फ्रेंस ऑन 22nd and 23rd August in Cochin to educate the dealers about new product being launched and about how this product is better than similar products of other companies. So dealer conference अपने रखा। The spouse was allowed to accompany the dealer and they could stay in the hotel from 20th August being a Saturday. मतलब डीलर कॉन्फ्रेंसेस 20 to 23, लेकिन एक तो डीलर के साथ उसकी वाइफ भी आई है, स्पाउस मतलब हस्बैंड और वाइफ, और वो भी 2 दिन पहले 20th or 21st, 2 days there is no conference. So dealer and spouse are enjoying the holiday, and 20 to 23 is the conference, but the spouse is still enjoying the holiday, with whom we don't know, but still enjoying the holiday. The leisure trip was organized for dealers and their spouse on 20th and 21st. मतलब कहना इसे पहला 2 दिन ऑफ द ट्रिप तो पूरा हॉलिडे है, दैट्स डेफिनेटली अ परक्यूजिट। बहुत क्लियरली आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर कंपनी अपने बिजनेस का कुछ काम करवा रही है तो दैट इज नॉट योर परक्यूजिट। एक्स्ट्रा कुछ भी हुआ, पिकनिक वाला डेज, दैट्स अ परक्यूजिट। स्पाउस का रहना, दैट्स अ परक्यूजिट। ओके, सो सैटरडे संडे पिकनिक था एंड द एयरफेयर, होटल स्टे, एवरीथिंग वाज मेड बाय द कंपनी, तभी तो परक्यूजिट होगा। अगर डीलर खुद पे करेगा तो वेयर इज द परक्यूजिट? The breakup of expenditure in relation to one Mr. Ashok Sharma is given to you. To and fro airfare of Mr. Ashok Sharma, ये डीलर का खर्चा है, ये परक्यूजिट नहीं है, कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया। बट टू एंड फ्रो एयरफेयर ऑफ हिज वाइफ मिसेस अशोक शर्मा, ये एक्स्ट्रा है, वाइफ इज गॉट नथिंग टू डू विद द कॉन्फ्रेंस, तो ये परक्यूजिट है। होटल स्टे इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर फॉर मिसेस एंड मिस्टर अशोक शर्मा ड्यूरिंग द वीकेंड, वीकेंड का दोनों का खर्चा इक्वल खर्चा है। मतलब कहना इसे 15,000 का खर्चा फॉर द डीलर, 15,000 फॉर हिज वाइफ, वाइफ वाला इज परक्यूजिट, और उसमें भी डे वाइज ब्रेकअप इज गिवन। मतलब 15,000 2 दिन का है, मतलब यू कैन से 20th August का डीलर का 7,500, 21st का भी 7,500, दैट इज 15,000 फॉर द डीलर एंड सेम 15,000 फॉर हिज वाइफ स्प्रेड ओवर 2 days, 7,500, 7,500. Hotel stay including breakfast and dinner for 22nd and 23rd. These are conference days. Okay, this is weekday, no? तो 7,000 into 4 each person each day. इसमें भी स्पाउस का if you understand 7 and 7 14 is full perquisite. डीलर का during conference you have to provide him food. If some coaching class invites me for outstation lectures, so there they have to give me रहना खाना पीना. That is not perquisite. I am coming there for them. Understood? Leisure trip का expense which are attributable, ट्रिप का तो पूरा का पूरा पर्सनली रहेगा, एंड कॉन्फ्रेंस का एक्सपेंस ये बिजनेस से रिलेटेड। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ बेनिफिट ऑफ परक्यूजिट? यू हैव टू आइडेंटिफाई, सर्कुलर ने एक्सप्लेन किया, यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन सा बेनिफिट डीलर को पर्सनली मिला है। स्पाउस का पूरा खर्चा पर्सनल बेनिफिट है, लीजर ट्रिप का पूरा खर्चा पर्सनल बेनिफिट है, दैट मच इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज परक्यूजिट। अगर वो 20,000 क्रॉस किया तो 194 आर का टीडीएस आएगा। लेट मी एक्सप्लेन द सर्कुलर। जो स्पाउस का फेयर है 25,000, दैट्स फुल परक्यूजिट, एक एक करके आइडेंटिफाई कर, दिस इज फुल परक्यूजिट। नेक्स्ट, होटल एक्सपेंस ऑफ 20th 15,000, देखो 20 तारीख का जो है 15,000 फॉर हस्बैंड एज वेल एज वाइफ, वो पूरा का पूरा परक्यूजिट है। यू अंडरस्टैंड, दिस इज 15,000 into 2 days, करेक्ट है। तो 20th का पूरा होटल एक्सपेंस, बिकॉज इट वॉज योर लीजर ट्रिप डे। The most important thing that you need to understand is the hotel expense of 21st we are taking only spouse. इसको प्लीज ऑब्जर्व कीजिए, दिस इज योर लीजर ट्रिप वाला डेज 20 and 21, 2 days है, 15-15 ईच। इन द सर्कुलर ऐसा बोला गया है कि अगर आप डीलर्स को कॉन्फ्रेंस के लिए इन्वाइट करते हो, कॉन्फ्रेंस स्टार्टिंग ऑन 22nd, तो 22nd and 23rd कॉन्फ्रेंस डेज का एक्सपेंसेस तो परक्यूजिट नहीं है, बिकॉज यू हैव टू गिव दैट। बट आपको उनको एक दिन पहले बुलाना पड़ेगा ना, कॉन्फ्रेंस के दिन सुबह सुबह कैसे आएगा? सो 1 day प्रायर इफ द डीलर कम्स, इट इज नॉट परक्यूजिट। मतलब व्हाट इज दिस एक्सपेंस का ब्रेकअप? 2 days प्रायर 20 तारीख का पूरा परक्यूजिट है, मतलब वो 15,000 पूरा परक्यूजिट लेने का, दिस 15,000, and 1 day before the
कॉन्फ्रेंस दैट इज 21st, 20th इज फुल परक्यूजिट, 21st में डीलर 1 डे प्रायर इज अलाउड, वाइफ इज नॉट अलाउड। मतलब जो 20 तारीख का पूरा 15,000 है वो परक्यूजिट होगा, और जो 21 तारीख है 21st, उसमें ओनली स्पाउस का वैल्यू विल बी परक्यूजिट, डीलर का खर्चा ऑफ दैट डे विल नॉट बी टेकन। 20th का वी आर टेकिंग फुल 15,000, 21st का वी आर टेकिंग ओनली स्पाउस का, क्योंकि कॉन्फ्रेंस के एक दिन पहले आना अलाउड है। 22nd एंड 23rd का जो खर्चा है उसमें तो वी विल नॉट टेक एनीथिंग ऑफ द डीलर, वी विल टेक ओनली द स्पाउस का। सो वी विल टेक, टोटल खर्चा कितना है 28,000, उसमें डीलर इज तो इन द कॉन्फ्रेंस, सो कॉन्फ्रेंस डेज इज नॉट परक्यूजिट, 1 डे प्रायर फॉर डीलर इज नॉट परक्यूजिट। सो लेट अस बी क्लियर, स्पाउस के ऊपर इनकर किया हुआ एवरी एक्सपेंस इज अ परक्यूजिट, ऑन द डीलर ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस डेज नथिंग इज अ परक्यूजिट, 1 day prior to the conference it is not a perquisite, so 2 days prior का we have taken perquisite, 21st का we have taken spouse का, यहां पे भी we will take only spouse का, these are conference days तो we will take only spouse का, and leisure trip का जो खर्चा है 22,000 that will be the perquisite। आपका जो conference का expense है obviously that will not be perquisite, मतलब ये नहीं होगा क्योंकि ये डीलर का खर्चा है, spouse का होगा। यहां पे let us understand, मिसिस का full 15 we will take, मिस्टर का वी विल टेक ओनली 1 डे का, 1 डे प्रायर वाला वी विल नॉट टेक, सो यहां से वी विल गेट 22,500, यहां से वी विल टेक ओनली मिसिस का 14,000 बिकॉज दीज आर कॉन्फ्रेंस डेज, यहां से वी विल टेक फुल 22, बट यहां से वी विल नॉट टेक एनीथिंग, सो 25 प्लस 15 प्लस 7.5 प्लस 14 प्लस 22 गिव्स यू 83,500 which is given to you under your option C, 83,500। Next, compute the specified income taxable at 30% under section 115 BBI। वो जो नया नया अमेंडमेंट आया है, अगर ट्रस्ट ने कोई भी वायोलेशन किया है, कॉर्पस डोनेशन रिसीव 12,20,000, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट नो वायोलेशन, एफडी विद SBI नो वायोलेशन, डिपॉजिट विद अ कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक एंड डिपॉजिट विद NBFC एंगेज्ड इन रिटेल कार ट्रेडिंग फाइनेंस, दीज अपीयर टू बी वायोलेशंस। आगे क्या, इनकम अप्लाइड बाय द ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द फॉलोइंग डोनर, डोनर के फायदे के लिए पैसा यूज किया, वलिश हैज कंट्रीब्यूटेड डोनेशन ऑफ 24, उसके लिए 15,000 यूज किया, रितेश हैज कंट्रीब्यूटेड 48,000, 20 हैज यूज्ड फॉर हिम, ही इज अ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर, खाली इसके लिए यूज किया हुआ पैसा वायोलेशन माना जाएगा, इफ यू अंडरस्टैंड और नो। इनकम अप्लाइड बाय द ट्रस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ मिस्टर वैभव गुप्ता द ट्रस्टी, ये तो लेना पड़ेगा। इनकम अप्लाइड बाय द ट्रस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ मिस्टर श्यामलाल, मिस्टर मनोहर अरोरा एंड श्रीधर अग्रवाल बीइंग एम्प्लॉइज ऑफ द ट्रस्ट, ये नहीं आएगा। वैल्यू ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज मेड अवेलेबल बाय द ट्रस्ट थ्रू इट्स एजुकेशनल चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन थ्रू टू चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर वैभव गुप्ता, वैभव गुप्ता कौन है, ट्रस्टी है, तो वी हैव टू टेक दिस। वैल्यू ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज मेड अवेलेबल बाय द ट्रस्ट टू द चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज नहीं लेना है, ट्रस्ट सी ऑथर फाउंडर मैनेजर ट्रस्टी सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर, सो ऑथर फाउंडर मैनेजर ट्रस्टी या सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर, वी हैव टू टेक एनीथिंग ओनली ऑफ दैट। Amount set apart last year for charitable purposes utilized for making donation to other charitable trust whose object is also donation, that means can I say ये accumulation है, accumulation का भी misutilization is going to be taken, तो finally कौन सा amount will be taken, एक एक करके। First 4,10,000 because it is in car trading, we are going to take that 4,10,000। next this 30,000 because it is for substantial contributor, next this 25,200 because it is for your trustee, and finally this 2,13,000 because it is misutilization of your accumulation, accordingly 678,200, 678,200 is going to be your answer। Next, ABC Limited has failed to deduct at source on payment to contractors even though payment exceeded the threshold limits under 194C. It has deducted 62 lakh on source to contractors during 22-23 but has not remitted up to 31st March 24. Which of the following statement is correct? This is with respect to your failure with respect to TDS का consequences. Non deduction किया तो interest and 271C लगेगा, but XYZ Limited में interest and prosecution both are going to be applicable. So they are giving, I think, two companies. ABC Limited has failed to deduct tax at source on payment to contractors during 22-23 even though payment exceeded the threshold limit. This is another company, sorry, my bad. XYZ Limited has deducted tax of 62 lakhs at source on payment to contractors on time
बट इट हैज नॉट रेमिटेड, मतलब एबीसी का फेलियर क्या है, डिडक्ट ही नहीं किया, तो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी इंटरेस्ट एंड डिसअलाउंस. XYZ का failure is a bigger failure, deducted but not deposited. So ABC will be liable for non-deduction interest, XYZ will be liable for non-payment interest. Interest तो दोनों को लगेगा. But now the question is, what about the other consequences? Will there be penalty? ABC has failed to deduct only, so there is going to be penalty. Failure to deduct, जो last case law किया ना in judicial update, XYZ has deducted, so there will not be penalty, but there will be prosecution. So interest will come for both. ABC के लिए penalty आएगा, XYZ के लिए prosecution आएगा. So interest will come and penalty will come for ABC, and interest and prosecution will come for XYZ Limited. Last question is with respect to a unit holder of REIT. Mr. X, a resident Indian, is in receipt of income from Ganga REIT, Yamuna REIT and Indus REIT. So 3 REITs are given. Okay. First, Ganga REIT has got a special purpose vehicle which has opted for 115BAA. Yamuna REIT has got special purpose vehicle which has not opted. You know, dividend received from SPV is going to be exempt for REIT. Dividend received from non-SPV is going to be taxable for REIT. लेकिन अगर SPV है and it opts for the new regime, then unit holder has to pay tax. तो ये दोनों तो old regime में, मतलब यहाँ पे unit holder may not have to pay tax. Date of purchase is given 1st April, 1st Jan and 1st April. The dividend component of income received from SPV and distributed to Mr. X by the REIT. मतलब Mr. X का इतना डिविडेंड है, आउट ऑफ द टोटल डिविडेंड. वी नो बिजनेस ट्रस्ट के इनकम का प्रोपोर्शनेट वी काउंट इन द प्रोपोर्शन ऑफ होल्डिंग. तो यहाँ का डिविडेंड 40 है, यहाँ का 35, यहाँ का 42 है. द रिकॉर्ड डेट इज 1st June 22 फॉर ऑल द 3 REITs मेंशन्ड अबव. आर गंगा REIT, यमुना REIT and Indus REIT required to deduct tax at source on dividend component of income received from SPV? एक तो पहली बात, आर दे रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS, पहले उसका डिस्कशन करेंगे. एंड वेदर द प्रोविजंस ऑफ 94(7) बी अट्रैक्टेड if Mr. X sells the units held by all the 3 REITs at a loss in January 23. 94(7) का थोड़ा सा explanation I will give you, but the first question is with respect to these dividend incomes that you have received as unit holder of business trust, will there be TDS? गंगा यमुना REIT क्या इनको TDS डिडक्ट करना? इसका SPV has opted for the new regime, मतलब इस डिविडेंड के ऊपर यूनिट होल्डर हैव टू पे टैक्स. बट ये दोनों SPV has opted for the old regime, मतलब यूनिट होल्डर also does not have to pay tax. That means if I am not wrong, A Limited को ही, A Limited वाला मतलब गंगा REIT को ही TDS डिडक्ट करना है. First let us see that, फिर I will explain about 94(7) dividend stripping. गंगा का जो डिविडेंड है that is taxable because SPV has gone at new, therefore इसका TDS will be 10%. यमुना and Indus का it will be exempt because the SPV is in old regime, तो no TDS. Effectively गंगा has to deduct and Yamuna and Indus do not have to deduct. तो Yamuna and Indus are required to deduct. देखो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. Yamuna and Indus are required to deduct. ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया. Even if you supposingly don't know 94(7), but I am explaining. Ganga is required to deduct, whereas Yamuna and Indus are not required to deduct at source. So this part till here is still correct, though we still want to know dividend stripping का आंसर. Ganga is required to deduct, but Yamuna and Indus are not required to deduct. मतलब यहाँ तक ये दोनों पॉइंट सेम. So अब आएगा आपका डिविडेंड स्ट्रिपिंग का एक्सप्लेनेशन. वी ऑल नो बोनस स्ट्रिपिंग. इफ यूनिट्स आर और सिक्योरिटीज अमेंडमेंट भी है acquired within 3 months before record date and transferred within 9 months after the record date and you have been allotted bonus, so loss will be ignored and that loss will become cost of bonus. But now we are talking about a case जहां पे बोनस मिला ही नहीं, बोनस नहीं मिला है, डिविडेंड मिला. तो there is 94(7) which says ऐसा कुछ कि आपको अगर रिकॉर्ड डेट के लास्ट 3 months के अंदर आपने परचेस किया, purchase within 3 months prior to the record date and sale is within, units के लिए 9 months दिया है लेकिन shares and securities के लिए 3 months. So in this case it is units, no, we'll focus on this time limit. REIT का units है ना. If you purchase units within 3 months before the record date and sell them within 9 months after the record date, तो ये वाले केस में record date क्या दिया है हमको? 1st June. If you purchase within 3 months before that and sell within 9 months after that, तो क्या होगा? जो भी आपका लॉस हो रहा है that will be ignored to the extent of exempt dividend. On the record date have you received exempt dividend? तो पहले देखते हैं. गंगा से जो डिविडेंड मिला वो तो टैक्सेबल था, that is not exempt dividend. यमुना एंड इंडस से जो मिला है वो exempt dividend था. ओके, तो we will ignore loss to the extent of exempt dividend. So let's be clear. I have sold गंगा का
यमुना का एंड इंडस का ऑल द 3 यूनिट्स एट अ लॉस. The loss will be ignored to the extent of exempt dividend. So first of all, Ganga mein to there is no exempt dividend, only Ganga ka dividend is taxable. I don't have to ignore any loss. Is that clear? Yamuna and Indus are the 2 companies where I have exempt dividend. So I will have to ignore the loss provided the purchase has taken place within 3 months before the record date and sale within 9 months. Units ko 9 months लगता है, securities का दोनों जगह पे 3 months है. तो you go and check, is the purchase within 3 months? Well, ये 1 जून है, तो ये वाला तो परचेज विद इन 3 मंथ्स है एंड सेल विद इन 9 मंथ्स है, बट ये वाला विद इन 3 मंथ्स नहीं है, मतलब इसके ऊपर भी हमको लॉस इग्नोर नहीं करना है. इफेक्टिवली ओनली इंडस आरईआईटी के यूनिट्स का लॉस वी हैव टू इग्नोर. सी देयर आर 2 कंडीशंस फॉर 94/7 टू अप्लाई. कंडीशन 1, यू शुड हैव रिसीव्ड एग्जेम्प्ट डिविडेंड. वो सिर्फ यमुना एंड इंडस में मिला है, गंगा में मिला ही नहीं है, तो गंगा में लॉस इग्नोर नहीं करना. एंड कंडीशन 2, द टाइम लिमिट ऑफ परचेस एंड सेल. परचेस विद इन 3 मंथ्स, सेल विद इन 9 months. वो सिर्फ इंडस में हुआ है, मतलब इंडस इज द ओनली कंपनी वेयर आई एम मीटिंग बोथ क्राइटेरिया. 1, आई हैव एग्जेम्प्ट डिविडेंड. 2, द परचेस एंड सेल हैज विद इन टाइम लिमिट. गंगा में एग्जेम्प्ट डिविडेंड नहीं है, टैक्सेबल डिविडेंड है, इसलिए आई डोंट हैव टू इग्नोर द लॉस. एंड यमुना का परचेस हैज टेकन प्लेस मोर देन 3 months. ये जून है, ये जैन में हुआ है, तो 3 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया, इसके लिए ईयर ऑल्सो आई डोंट हैव टू इग्नोर. इफेक्टिवली ओनली इंडस आरईआईटी में आई हैव टू इग्नोर द लॉस. तो ये लास्ट 2 ऑप्शन है. डिविडेंड स्ट्रिपिंग विल अप्लाई इन केस ऑफ यमुना एंड इंडस but not Ganga, तो wrong हो गया. Dividend stripping would attracted in case of Indus but not in case of Ganga and Yamuna, and that becomes our answer. Ladies and gentlemen, this is the discussion of the MCQs. as I have told you कि ये solutions तो हमारा already PDF has been shared in the Telegram channel, जिसका आपको link नीचे मिलेगा. I once again in the ticker, if you see below, the new contact number, that 1-point contact with respect to all your queries, and whenever and wherever required, I am going to be available for you on this number. You just have to leave a WhatsApp on this number if you wish to speak to me. The moment I am free, I will be giving you that time so that you can talk to me at that point of time. Otherwise, your queries will be answered through WhatsApp. Please make sure, ladies and gentlemen, that you stick to this number henceforth. I once again remind you that during the upcoming Navratri, I am going to come up with some big major announcement. If I have had little contribution also in your life, if I hold any value for you in life, I humbly request you to join me for that live session. The dates will be announced in advance on social media. As far as your other questions are concerned, a very basic question on PGBP where you have to do add less no effect का adjustment या आपको TDS का, these are cases which are very very easy and obvious. Some of them are based on the statutory or the judicial updates that have been announced. However, though they are all solved, in case you have any difficulty, अब मैंने आपको बता दिया कि आपको WhatsApp कौन से नंबर के ऊपर you can WhatsApp and ask your doubts. I will get it sorted for you, ladies and gentlemen. Thank you so much for your time, energy, cooperation. I hope you join me for my live session when I'm making that big announcement. Have a nice day. Study well, be a good professional, make your parents proud, make your family proud, and achieve everything that you desire in life. Thank you very much for watching the lecture. Have a nice day. Bye-bye.